Good morning, children. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the dimensions of business environment. But you must be thinking why I have started my video with the flow chart of features of business environment. Can you guess why? Which topic we are going to deal in? The dimensions. The major topics you already know about political, legal, technical. So here we are. As we all know that business environment consists external forces which are either directly or indirectly affect the functioning of our business enterprise. But these external forces are categorized further into two categories. One is specific environment and other is general environment. The specific environment actually influence the working of business firm directly. Why? Because it includes investors, customers, suppliers, competitors. They are directly in relation with the enterprise. Whereas general environment indirectly influences the working environment, which includes economic, social, legal, political, and technological forces. The specific environment which directly impacts, which includes a single individual or an institution with which the business has to regularly deal in, is beyond the scope of syllabus for your class 12th. So the present chapter is actually dealing with only general forces, which are now your further 5 dimensions of business environment, which are general environment for the business, not specific. That is why I started my video with this topic. These 5 dimensions of business environment are a part of general environment. They are considered very important while taking decisions for improving the performance of enterprise. So all in all, a management should always gain benefits by being aware of this environment surrounding, because it is their chance or opportunity, or we can say avoid threat, by just knowing the environment and acting accordingly rather than being disinterested or ignorant about it. So they must know these dimensions. We are going to discuss each and every dimension of this business environment separately. The first dimension is economic environment. The economic environment refers to all those factors and forces which are going to influence the economy of a nation, economy of a country. The income level at the national level and the per capita income, profit returning rate, employment rate, industrial, monetary and fiscal policies of the government, inflation rate, महंगाई, interest rate, tax rate, change in disposable income of the people, stock market indices, value of rupee. These are some of the economic factors. They can affect the management practices of the enterprise. Why do all these things actually impact business? Because business itself is an economic activity. So they are going to influence a very strong impact on the business, as these interest rates, inflation rates, tax rates can significantly change the demand for products and services. Like if there is inflation, or we can say in Hindi ki महंगाई बढ़ रही है, तो the cost of raw material will increase. Obviously आपका जब raw material महंगा आएगा, आगे सारी चीजें इकोनॉमी में महंगी हो जाएंगी. Disposable income is my that income which I can spend to benefit or to consume something. वो डिस्पोजेबल इनकम अगर मेरी बढ़ती है, यानी कि आई कैन स्पेंड मोर, माई स्पेंडिंग और परचेजिंग पावर इंक्रीजेज,
it will also increase my demand. If my demand will increase, it will again give a cyclic effect to the supply, कि supply chain को भी मजबूत रहना पड़ेगा क्योंकि लोगों की disposable income बढ़ गई है, they are demanding more, so you have to create a good quality and quantity of stock. Then if there are low interest rates on loans, there is a higher capacity, higher probability that people will go for buying homes and other wealthy assets. क्योंकि अगर उन्हें लोन्स पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा तो शायद उनकी परचेजिंग पावर उस घर को खरीदने की, उस एसेट को खरीदने की बढ़ जाएगी. सो दे विल बी हैप्पी विद दिस फाइनेंशियल स्कीम. Paying GST bill, demonetization of 500 and 1000 rupees note, they have all significantly influenced almost all the business enterprises. There is hardly any business enterprise which was not affected due to the economic policy that was called off by Prime Minister Narendra Modi, demonetization. So on a whole, we can say that this economic environment actually provides sometimes opportunities for some business enterprises, whereas threats for the others. So the enterprise needs to scan the environment and then act accordingly. The second environment is social environment. Social environment actually is represented by what characteristics our society believe in. हमारी सोसाइटी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में विश्वास रखती है, हम उसे सोशल एनवायरनमेंट मानते हैं. So by definition, we can say that social environment refers to the customs, traditions, values, cultures, social trends, belief, norm, rituals, education, etc. There are three keywords for social environment, namely traditions, values, and social trends. I will explain these three terms one by one. Make sure that you are listening and noting it down very carefully. सबसे पहले ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं. ट्रेडिशन वो चीज़ होती है जो बहुत सदियों से हमारे यहाँ चलती आ रही होती है, लाइक दैट हैज़ लास्टेड फॉर अराउंड डिकेड्स. डिकेड के होते हैं 10 साल और बहुत बहुत 10 साल. तो जो चीज़ हमारे यहाँ डिकेड्स से चलती आ रही होती है हम उसको ट्रेडिशन या मान्यता मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ट्रेडिशन टू सेलिब्रेट होली, दिवाली, क्रिसमस, गुरुपुरब. And all these festivals provide a good opportunity for different types of companies like greeting card companies, shops of sweets, gift shops, etc. ये वो ट्रेडिशंस हैं जो हम इसको आगे चलाते जा रहे हैं और इसके लिए काफ़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस को पता है कि हमें इस मौके पर अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है, ये आएगा ही आएगा. दे ऑलरेडी नो दिस, सो दे नीड नॉट lose the chance. The second major important topic for social environment is values. Values refer to those concepts of the society in which society holds a higher esteem, जिसके अंदर सोसाइटी किसी चीज को लेकर काफी रिस्पेक्ट रखती है, अपने मन में आदर सत्कार करती है या संस्कार रखती है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए सोसाइटी के मन में हायर एस्टीम है. These are freedom, social justice, equality of opportunity and national integration. देश के लिए एकता. ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ सोसाइटी के अंदर होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस एंटरप्राइज कभी भी अपने मेल या फीमेल एम्प्लॉय के बीच में इनइक्वालिटी नहीं लेकर आता एंड ही पेज इक्वल टू ऑल द एम्प्लॉयज. द सैलरी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और कलर. देन थर्ड important topic for social environment is social trend. ट्रेंड इज समथिंग जो आजकल चल रहा है, ट्रेंडी. ओके, तो सोसाइटी के अंदर कोई नया ट्रेंड आता है जो सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे आजकल हेल्थ रिजीम का आया हुआ है. सो फॉर दिस healthy products have come into the market. Organic products, organic shops are having so much to offer
for their new trendy customers. So actually, social trends provide opportunities and threats to the business enterprises. अगर वो ट्रेंड के मुताबिक आपके पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, and you are aware and you are capable to produce the required output, then it is an opportunity for you. And if something is not your cup of tea, अगर वो आपके बस की बात नहीं है, तो आपके लिए वो एक थ्रेट हो जाएगा कि आजकल तो ये बदलाव आ गया सोसाइटी में, हम तो इसके हिसाब से कोप ही नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, awareness towards health has increased the demand for organic products, for mineral water, for gym, etc. बट इसी ने एक और इंडस्ट्री के लिए थ्रेट भी पैदा किया है, दैट इज टोबैको इंडस्ट्री एंड लिकर इंडस्ट्री. इसके आने की वजह से टोबैको और लिकर की तरफ लोगों का ध्यान कम हो गया है, नॉलेजेबल लोगों का ध्यान, बिकॉज दे नो दैट कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट्स will ultimately harm their throat or liver. तो इन्हीं सोशल एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी चेंजेस हमें बिजनेस के नज़रिए से डिसीजन मेकिंग में देखने को मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक मैकडोनल्ड्स, बीफ इन इंडिया इज़ बैन, सो they came up with aloo tikki burger, Mac aloo tikki, because they know something which is not acceptable to the society. They are not going to do that because people will again rebel against them. They will not purchase their products. Therefore, it is very necessary to understand a social environment of a particular area to know what is acceptable to the society and then only proceed with your plans. I hope it is very much clear to you, the economic environment where you get to know the various forces that are acting on the economy of the country, कि कौन सी चीज़ के राइज होने से या डिक्रीज होने से किस तरह से डिमांड या कॉस्ट पर चेंज आ रहा है, एंड सिमिलरली किस तरह से वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल ट्रेंड्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइज की पॉलिसीज में, जिसके 3 मेजर पार्ट्स क्या थे. ट्रेडिशंस, जो डिकेड्स बाय डिकेड्स फॉलो होता आ रहा है. वैल्यूज, जिसके लिए सोसाइटी एक रिस्पेक्ट या एस्टीम हाई होल्ड करती है अपने मन में. एंड देन सोशल ट्रेंड्स, जो एक तरह का अपॉर्चुनिटी या थ्रेट प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को.